Hello everyone, welcome to the FireShark Technologies. So let's take an overview of today's session. So this is the overview of today's session. We are going to learn introduction to Maltego, types of reconnaissance on Maltego machines, and footprinting countermeasures. So first of all, start with Maltego. What exactly is Maltego? Maltego is a powerful OSINT information gathering tool. Basically, what is OSINT here? OSINT stands for Open Source Intelligence, which refers to any information that can legally be gathered from free public sources about an individual or organization. Basically, OSINT is a framework for information gathering. For effective and successful penetration testing, information gathering is a prime aspect and must be therefore given utmost importance. An attacker would attempt to gather as much information as he can about the target before executing an attack. Means Maltego एक tool है, information gathering tool है, जो कि काफी हद तक मतलब एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता है. You can understand like effective and successful penetration. It is used for effective and successful penetration testing. Information gathering is a prime aspect, and more things via Maltego. So let's see. Maltego offers broadly two types of reconnaissance. There is two types of reconnaissance. First of all, infrastructural, and the second one is personal. In infrastructure, reconnaissance deals with domain covering DNS information such as name server, mail exchange, zone transfer table, DNS to IP mapping and related information. Means ये क्या करता है, infrastructure reconnaissance means infrastructure की जो भी information होती है
ये गैदर करके देता है. फॉर एग्जांपल डोमेन कवरिंग डीएनएस इंफॉर्मेशन सच एज नेम सर्वर, मतलब नेम सर्वर के लिए अगर आप देख रहे हैं मेल एक्सचेंज के लिए, zone transfer table, DNS to IP mapping and related other information. And in personal reconnaissance on the other hand include personal information. Personal reconnaissance में क्या होगा, personal information ही extract करके देगा, such as email address, phone numbers, social networking profiles, mutual friend connections, and so on. So these are two types of reconnaissance on Maltego, infrastructural and personal. And Maltego framework and advantages. Maltego use seed server by sending client data in the XML format over a secure HTTPS connection. Once processed at the server side, the requested results are returned to the Maltego client. Means Maltego client क्या है, ये जब आप Maltego से आप कोई भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए, जो भी आपके टारगेट के लिए आप रिक्वेस्ट करते हो, तो ये सर्वर साइड पे प्रोसेस होके आपकी जो भी इसका रिजल्ट निकल के आएगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपके Maltego क्लाइंट के ऊपर आपको शो कर देगा. Gathering publicly available information using search engines is a time-consuming task. We already learn about footprinting, their tools, techniques. उसमें हमने क्या देखा था, starting with like from search engines, from basic tools, or you can say some social media sites. सो उनमें क्या था, वो जैसे सर्च इंजन से हम करते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग. ऑफ कोर्स दे हैव इंफॉर्मेशन, आप इंफॉर्मेशन वहां से गेट कर सकते हैं, बट वहाँ वो काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है. हम प्रैक्टिकली मतलब हो सकता है कुछ चीजें छूट भी जाए, तो मैनुअली जो हम करते हैं वो टाइम कंज्यूमिंग काफी होता है. तो माल्टेगो क्या करता है, माल्टेगो ये सारी बहुत कम टाइम में आपको मतलब सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने लाके मतलब आपको शो कर देता है. Maltego largely automates the information gathering process, thus saving a lot of time. Means आपका काफी टाइम बच जाता है इससे. The graphical display of the information minded by the software aids in analyzing the data and helps determining the link between various entities. Means जो Maltego है वो जो भी आप ये इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके देगा, ये एक ग्राफिकल मैनर में आपको प्रेजेंट करेगा, और उससे आप इजीली उसको समझ सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं. सो ये क्या कहता है, ग्राफिकल डिस्प्ले और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन. आपको जो भी इंफॉर्मेशन गैदर होके आई है, जो भी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट हुई है, उसको ग्राफिकल में प्रेजेंट करेगा. सो इजीली आप क्या कर सकते हो, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एनालाइज कर सकते हैं. Next is Maltego in Kali Linux. You can see here in Kali Linux. First of all, you have to go on your Kali machine menu bar. After that, on applications. In application, there is information gathering and information gathering. There is many tools for information gathering and Maltego also. And for you have to click on Maltego for run the Maltego, and then Maltego start. So you can see in this picture, first of all you have to go on this menu bar, then there is application, then I think there will be penetration also, and after that information gathering, and then this is the Maltego tool. After that there is 4 types of Maltego clients. What does it mean, Maltego clients? Basically, you can understand like Maltego versions. There are 4 versions: Maltego Excel, Maltego Classic, Maltego CE Community version, and Case file. So let's see about these clients. First of all, start with Maltego Excel. Maltego Excel means extra large, is the latest version that Petreva came out with. Means it is the latest version. It has all the feature present in Maltego Classic with the addition of working with the larger graphs. Means it is the latest one, and give latest features also.
like Maltego Classic and Maltego Excel to allow to map out the network and do a threat analysis, which makes it easier for us to find the weak points. So माल्टेको एक्सेल है, ये लेटेस्ट वर्जन है, इसमें लेटेस्ट फीचर होंगे, लार्जर ग्राफ्स होंगे, तो ये आपको बेस्ट थ्रेड्स मींस आपको इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके देंगे और इससे आप क्या कर सकते हो, अब यहाँ से आपको थ्रेड एनालिसिस और नेटवर्क एनालाइज करने में वो मैप देख के आपको मतलब आप इजीली एनालाइज कर सकते हैं, आपको बहुत आसानी होगी और easier for us to find the weak points. And the next one is Maltego Classic. It is the professional version that provides extended functionality when compared with the CE Community Edition tool. It requires a license key to be used. Means in Maltego Classic ये प्रोफेशनल वर्जन है और इसमें आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है और लाइसेंस की यू हैव टू यूज लाइसेंस की फॉर Maltego Classic. Means Maltego Classic यूज करने के लिए you have must license key. After that Maltego CE community version, ये basically free होता है. This version is available for free. However, a simple sign up is required to use it. It provides us with the same feature set as a commercial version, however with a few limitation. Means ये free version होता है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको login register मतलब little एक simple सा आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे साइन अप करना पड़ता है, उसके बाद यू कैन इजीली यूज इट एंड इसमें ऑलमोस्ट सभी क्या होते हैं, इसमें सभी फीचर्स होते हैं, बट देर इज अ फ्यू लिमिटेशंस बिकॉज इट इज फ्री, सो देर इज अ फ्यू लिमिटेशन ऑल्सो. एंड द फोर्थ, the last one, case file. Maltego released this version as many users were using the tool to build graph with the offline data that they had gathered from various sources. ये सबसे लास्ट वर्जन होता है केस फाइल, ये भी फ्री होता है, बट इसमें क्या होता है, इसमें जो भी आपकी इंफॉर्मेशन आती है, जो भी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करता है, यहाँ पे माल्टेगो कम्युनिटी वर्जन, क्लासिक और एक्स्ट्रा लार्ज, इनमें क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जो भी इंफॉर्मेशन होती है, बट यहाँ पे मैन्युअली ग्राफ बना सकते हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ग्राफ नहीं होंगे. So Maltego released this version as many users were using the tool to build graph. ये ग्राफ बनाने के लिए काफी यूजर्स इसका इस्तेमाल करते हैं विद ऑफलाइन डेटा दैट दे हैड गैदर्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. मींस जो भी यूजर्स हैं ये किस लिए इस केस फाइल वर्जन का किस लिए यूज करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने डिफरेंट साइट्स और मतलब जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने एक्सट्रैक्ट की है, गैदर की है, उस इंफॉर्मेशन से यहाँ पे ग्राफ बनाने के लिए इसको यूज करते हैं, ताकि उसको जो भी है टारगेट को, नेटवर्क को मतलब अच्छे से क्या कर पाए, एनालाइज कर पाए. It can be used to determine the relationship and real world like link between hundreds of different types of information. Means it will give relationship and real world like link between hundreds of different types of information. It can use to plot relationship between pieces of information. Means ये relationship शो करने के लिए pieces of information, different informations में link कौन सी इंफॉर्मेशन किस तरीके से जुड़ी है, तो इस तरीके से इसको यूज करते हैं. सॉरी. So we learned about 4 clients of Maltego, and you can say versions, 4 versions of Maltego. And after that, after choosing one of them, like this is the so you can see this in this image, Maltego Excel, we learned about it. After that, Maltego Classic, these 2 versions are you have to purchase, and these are not free. After that, Maltego CE community version, sorry, community edition, and Maltego class file. So these are free, and if we want to use like a free version and with the more features,
we easily use Maltego CE Community Edition most of the cases, because this is free as well as have more features as compared to case file. So after choosing you have to click on here run for Maltego CE or Maltego case file. It's your choice. And for Maltego Excel and Maltego Classic, you have to write here activate with the key. Here is a license key. And uh, after run, after click on run in Maltego CE, for example, I choose Maltego CE Community Edition, and I have to write here I have to click on run. After that, the next interface is like this. For community edition, you have to register here. This is the simple sign up, and you have to register here. After that, you have to log in. You have to write it here email address. After that, write here password, and after that captcha, and next. Or you can see here welcome, login result, means आपने पहले login किया, login result, select transform seeds. We also discuss about transforms. Just you see 4 steps, select transform seeds and install transforms. So this is the way how we can start Maltego. So now we discuss about the what does Maltego do in briefly. So Maltego is an information gathering tool inbuilt in Kali Linux by default and can be used for determining the relationship and real world link between like people, group of people, you can say social networks, companies, organization, websites, internet infrastructure such as domains, DNS names, net blocks, IP addresses. So these are the main features, and Maltego do these things for information gathering. You can see here we discuss about in previous topic, like it gives graphical representation of information. So how it gives graphical representation, we also see practical as well as on Maltego. First of all, we have to clear our concept in Maltego. So see Maltego community. This is a Maltego community edition, and this is the information of I think Geekforge. This is the choosed domain, and this is the graphical representation of this domain, and this is the informations. And we also used we will use is as a practical. Just see like this is the graphical representation in Maltego. After that, what are Maltego machines? There are some Maltego machines. What are Maltego machines? Maltego machines represent the automation of the transform running process. Means Maltego machines can represent the automation of the transform running process. There are many transforms. What does it mean, transforms in Maltego? एक तरह से ये मशीन्स होती हैं जिनको हम अप्लाई करते हैं. कोई भी हमने टारगेट चूज किया है, कोई भी डोमेन, कोई भी पर्सन, मतलब कोई भी हमने किसी की जो भी हमारा टारगेट है उसकी इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चूज सम ट्रांसफॉर्म्स. तो ये ट्रांसफॉर्म एक तरह से मशीन की तरह काम करते हैं. लाइक हमने सम इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल्स हमने यूज किए थे, हुईज हो गया, एनएस लुकअप हो गया, या फिर एनमैप हो गया, मतलब काफी सारे हमने टूल यूज किए हैं. तो इस तरीके से ये ट्रांसफॉर्म एक तरह से मशीन की तरह काम करता है. मतलब हम साइमल्टेनियसली जरूरी नहीं कि हम एक ही उस पे ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे, साइमल्टेनियसली हम 2 3 4 as we have need, means हमको जिसकी नीड है हम वो
उस पर ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर सकते हैं. आफ्टर दैट वो क्या करता है, हमें इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर देता है. डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसफॉर्म, डिफरेंट डिफरेंट काम उनके होते हैं, मतलब सब अपने वो हम देखेंगे प्रैक्टिकल में किस तरीके से उनके मतलब काम होते हैं, मतलब सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं. लाइक सम वी विल डिस्कस अबाउट इट. And Maltego machines are macros in the Maltego desktop client that run multiple transform on a data set. Means कोई भी data set है जिसके हमें information extract करनी है, उस पर हम multiple transform apply कर सकते हैं. These macros are written using the Maltego scripting language. ये ट्रांसफॉर्म कैसे बने होते हैं, Maltego scripting language से, and a custom scripting language as well as developed to allow any user to create their own machines. Means Maltego scripting languages जो inbuilt इसके अंदर हैं already, और custom scripting language developed to allow any means custom scripting language for user can build their own machines, or you can say build their own transforms for extracting or gathering information. Depending on the script, machine can run transform both in parallel and sequentially. Users can run multiple transform on the same data. Means जो ट्रांसफॉर्म है वो पैरेलली भी हम यूज कर सकते हैं, सीक्वेंशियली भी कर सकते हैं. पैरेलली यू कैन अंडरस्टैंड लाइक इन पैरेलल, मतलब साइमल्टेनियसली दो या मतलब जितने भी हमने ट्रांसफॉर्म लगाए हैं वो साथ साथ ही काम कर रहे होंगे, मतलब इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए. सीक्वेंशली वन बाय वन, एक ट्रांसफॉर्म का काम कंप्लीट हो गया है, आफ्टर दैट सेकंड स्टार्ट हो जाएगा, देन थर्ड स्टार्ट हो जाएगा. In this way, user can run multiple transform on the same data entity or run a series of transform from one data output to another or perform both simultaneously. As the machine runs, investigators can use that time for other tasks and preparation. Once the machine is done, user will see a fully populated graph. जो भी इंफॉर्मेशन आएगी उसका ग्राफ बन जाएगा. इन दिस वे, इस तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करेगा. The result of which they can begin to analyze. After that, we can analyze in the result after getting the graph of the information. You can see here there is a machine can run transform in three ways: in parallel, in sequentially, in both. We discussed just like in parallel and sequentially. In parallel, running multiple transform on the same entity at the same time पे multiple transform एक जो भी एक साथ रन कर रहे होंगे. Sequentially जो भी हमारा डेटा सेट है उस पे, and sequentially में क्या होगा, one by one running transform in a sequence on return entities of the previous transforms. And in both there is parallel as well as sequentially running transform both in parallel and sequentially on specified entities. So this is the how machine how transform runs on machines in Maltego. After that, which type of machine are available in Maltego? There are three types of machine available in Maltego desktop client. First of all, pre-installed OSINT machine, third-party machine, and custom machine. So let's see what does it means, types of machines. First of all, start with pre-installed OSINT machine. What does it mean pre-installed in OSINT machine? You can understand with the word pre. So this is like previous. Maltego comes with a set of pre-installed machines that are built with Maltego standard transforms. Means यहाँ पे जो ये machines होंगी ये inbuilt होंगी, और इसमें जो भी transforms होंगे वो हमें कुछ भी नहीं करना है, transform इसमें inbuilt होंगे. और these machines are free to use for all Maltego users. Every user can use these Maltego machines, and they query OSINT data to perform tasks like network footprinting.
मीन्स जो भी ओसेंट जो भी डेटा है हमारा उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, नेटवर्क प्रिंटिंग कर सकते हैं, और जो भी हम अपना टास्क हमें परफॉर्म करना है इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए वो हम परफॉर्म कर सकते हैं. For example, there are some companies, Stalker, Find, Wikipedia, Edits, and Footprinting, L1, etc. This is the example of some pre-installed OSINT machines, and we will also see in practical. Third party machine, there are some third party machine as well. As beside the pre-installed machine, Maltego integrates with a variety of third party free and paid data sources. Means यहाँ पे क्या होता है, Maltego integrate with a variety of third party free जो भी मशीन्स भी होंगी यहाँ पे, और पेड भी होंगी. पेड भी मतलब कुछ पेड होंगी और कुछ थर्ड पार्टी तो होंगी, और मतलब और लेकिन वो फ्री होंगी, हम उनको इंस्टॉल कर सकते हैं. Some of these data integrations like RIS, IQ, Passive Total, and the FireShark DNS-DB, and many more come with machine created by the integration developers. Users who have API keys or subscription to the data integration will be able to access these machine upon installation of the hub items. Means ये जो transforms होते हैं इनके लिए मतलब सम जो होती हैं थर्ड पार्टीज मशीन वो इजीली इंस्टॉल हो जाएंगी, लेकिन सम मीन्स उनको हम इंस्टॉल तो कर सकते हैं बट देर हैव API कीज एंड सब्सक्रिप्शन. वहाँ पे वो सब्सक्रिप्शन और API कीज की वहाँ पे मांग होती है, हमें API की या तो API की डालनी पड़ेगी या फिर सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा. आफ्टर दैट वी विल यूज this transform or these machines. So this is about third party machines. After that, custom machines. Finally, Maltego allows user to create their own machines. Means हम यहाँ पे कस्टम मशीन्स में क्या है, यूजर्स जो यूजर हैं वो अपने खुद की मशीन्स भी क्रिएट कर सकते हैं. With just a few lines of code, investigators can easily build machines for their standardized investigative process. Means किसी को मतलब लैंग्वेज कोई प्रोग्रामिंग आती है तो क्या कर सकते हैं, अपनी खुद की मशीन्स भी यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं फॉर एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन. एंड जो अपनी जो भी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये माल्टेको जो है यूजर के लिए भी मशीन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि वो अपनी मशीन यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं. So let's see practical of Maltego. Just give me a second. So let's see. There are two ways we have to start Maltego. So first way is you can see here applications. After that, pen testing and the information gathering. You can see here Maltego, and you have to just click on Maltego and it will run. And the second
the second way is you just write it here, Maltego, and it will start. I already I already registered in Maltego Community Edition. So first of all, when you will start Maltego, you see the 4 versions we discuss about 4 clients, and you have to choose one, and after that login, and after that this type of interface will open. So you can see this is the we discuss about like investigate, view, entities, collection, transforms, and you can see transform hub, transform manager, new local transform, certificate manager, managed services, machines, collaboration, import, export, and windows. So see here, we just discuss about transforms. So there are some transform, and you can see like STIX2 utilities, and why we use this structured threat information expression is a language and serialization format. And if we want to see the information about a particular transform, then see the details, like, and it will give the information about this transform. And if we want to install, then simply just install here. This is we discuss about third party transform. This is third party. Some of third party transforms are free, and some uses API keys. So in this way, application server 108 transform entities, and this is the complete, and now finish, and this is installed transform. And we can also see like this. You can see here cipher trace, cryptocurrency forensics, and anti-money laundering intelligence. So you can see here there is no install option. So this is not free, and you have to uh, write it here, API keys, or some another procedures for it. And this is I think this is not for there is no installation option. And you can see more transform. You can, there is also detail, you can install it. You can there is only details, and there is many transforms you can install. After that we have to like see machines. If we want to like run machine, and हमने देखा था कुछ क्या देखा था हमने, ट्रांसफॉर्म्स को देखा था जो कि इनबिल्ट होते हैं। ये जो ट्रांसफॉर्म है यहाँ पे, अब ये जो मशीन्स है यहाँ पे इनबिल्ट है। ये जो हमने एग्जांपल देखा था फर्स्ट, जो हमने मशीन देखी थी, कंपनी स्टॉकर, फाइंड, विकिपीडिया एडिट्स, फुटप्रिंट L1, फुटप्रिंट L2, and many more. So let's choose some of them, like company stalker, find wikipedia. Okay, there is only one. So like URL to network and domain information. Like I choose URL to network and domain information, and now I have to press on next. Then I have to give URL. Like if I want to see the information of www
www.facebook.com, then finish. Now you can see here new graph. Here is a build new graph, and empty. Okay, there's no information. Now it will show the information processing. You can see here graphical representation. You can see here, and you can analyze in this way the total information in the graphical manner. Like you can see here also this information in the output, but it's very headache type information, and it time consuming, but in the graphical representation you can easily see and analyze in very very low time. आप कम से कम टाइम में यहाँ पे क्या कर सकते हैं इजीली, मतलब आपको इतने अच्छे से इतने क्लियर वे में आपको इंफॉर्मेशन देखने को मिल रही है. सो इन दिस वे it works, and you can like I what happened? Okay. You can save here, and if you don't want to save, then after that I you can choose another one like company stalker, and give name like www.google.com and finish. Now you see the information. You see the graph, how it will give the information in the graphical way. And we also discuss about case file version of Maltego client. At that version, there is information it will give, but there is no graphical representation. You have to make graphical representation graphs via your information. But this is the community edition, and in absolutely free, and have many features. So in this way you can use Maltego for extracting information or gathering information. Just give me a second. So this is about Maltego, and now we see
some countermeasures of footprinting. We see Maltego in briefly, and yes, we learned about all these. हमने देखा यहाँ पे पैरेलल भी हम क्या यूज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म को सीक्वेंशियली भी कर सकते हैं और दोनों तरीके से भी कर सकते हैं. And we also see about it, and you can see machines in Maltego: pre-installed free OSINT machine, third-party machine, and custom machines we see in the Maltego. And after that, footprinting countermeasures. So for footprinting countermeasures, we have to apply some restrict the employees to access social networking site from organizations network. Means employees को कोई भी social networking site ना मतलब restrict किया जाए, permission ना हो organization network पे. Configure web server to avoid information leakage. So we have to configure web server to avoid information leakage. And the educate employees to use pseudonyms on blogs, groups, and forums. And do not reveal critical information in press release, annual reports, and product catalogs, etc. Means कोई भी कंपनी की क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है वो रिलीज नहीं करनी है, वो प्रेस में भी नहीं, एनुअली भी नहीं, एनुअल रिपोर्ट्स एंड प्रोडक्ट कैटलॉग्स. After that, limit the amount of information that you are publishing on the website and internet. जो भी कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं, so most of the time like you can see on the LinkedIn, सब अपनी इंफॉर्मेशन डालते हैं कि वो कहाँ काम कर रहे हैं, और उससे भी ज्यादा, और या फिर कोई भी सोशल मीडिया साइट पे इंफॉर्मेशन डालते हैं कहाँ काम कर रहे हैं, और किस तरीके से काफी चीजें रिवील हो जाती है इससे, और इससे मतलब जो अटैकर है वो काफी हद तक इंफॉर्मेशन गैदर करके उसका मिसयूज कर सकता है. सो इसलिए अवेयर किया जाना चाहिए कि एम्प्लॉयज को कि कम से कम वो लिमिटेड इंफॉर्मेशन डाले सोशल मीडिया साइट पे, और वेबसाइट और इंटरनेट व्हाटएवर. और जो भी कंपनी है वेबसाइट, जो भी वेबसाइट की जो भी इंफॉर्मेशन, जैसे अभी हमने जो भी किसी भी एक डोमेन का हम इंफॉर्मेशन गैदर करने चले जाते हैं किसी भी टूल का यूज करके, मैनुअली यूज करके, वो वेबसाइट कब बनी थी और किस तरीके से, मतलब उसकी जब हम इंफॉर्मेशन गैदर करें तो इस तरीके चाहिए चीजों को कि कम से कम इंफॉर्मेशन कोई रिवील हो सके. मतलब जो जरूरी है वो तो आएंगे ही, और दैट इंफॉर्मेशन मस्ट बी ऑन इंटरनेट, बट उसके ज्यादा मतलब बहुत ब्रीफली चीजों को नहीं अवेलेबल हो वेबसाइट पे और इंटरनेट पे. After that, use footprinting techniques to discover and remove any sensitive information publicly available. Means use footprinting techniques to discover and remove any sensitive information publicly available. Means publicly कोई भी ऐसी sensitive information नहीं डालनी है जिससे कोई भी misuse, मतलब footprinting करके मतलब कोई भी आपकी information का misuse कर सके. Prevent search engines from caching a web page and use anonymous registration services. Means search engines पे जो caching web page होता है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो एज अ टेम्परेरी वो रह जाती है, सेव हो जाती है. तो वो भी क्या है, प्रिवेंट सर्च इंजन फ्रॉम कैशिंग वेब पेज एंड यूज एनोनिमस रजिस्ट्रेशन सर्विसेज. And enforce security policies to regulate the information that employees can reveal to third parties. So there must be enforced security policies, there must be some security policies to regulate the information that employees can reveal to third parties.
After that, educate employees about various social engineering tricks and risk. So we learned about footprinting more, and of course in footprinting we learned about social engineering with footprinting in our previous session. In social engineering मीन्स यहाँ पे कोई टूल यूज नहीं होगा, बट हम क्या कर रहे थे, मैनुअली, ज्यादातर मैनुअली इंफॉर्मेशन को गेट करने की कोशिश कर रहे थे। मैनुअली मीन्स ह्यूमन इंटरेक्शन से। सो वहां पे तो पता भी नहीं चलेगा कि इंफॉर्मेशन, मतलब अगर सोशल इंजीनियरिंग से कोई भी इंफॉर्मेशन गेट की जाती है तो वहां से तो रिवर्स इंजीनियरिंग करके और पता भी लगाना मुश्किल हो जाता है कि इंफॉर्मेशन आखिर लीक कहाँ से हुई है। सो जो भी एम्प्लॉयज होते हैं तो उनको क्या क्या है, ज्यादा से ज्यादा इन ट्रिक्स और रिस्क जो भी होते हैं सोशल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, उनको अवेयर कराना चाहिए कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है, एंड दे हैव टू एजुकेट दैट आर एम्प्लॉयज. After that, encrypt and password protect sensitive information. We use this word encrypt and password protection many times. Encryption basically what it do, like encrypt use for uh, change, or you can say change plain text to, it converts plain text to cipher text. जो भी आपका plain text होता है उसको cipher text में encrypt, मतलब cipher text में convert कर देता है. this is encryption, ताकि जो भी थर्ड पार्टी, कोई भी थर्ड पार्टी है, कोई भी malicious अटैकर और हैकर है, वो आपकी इंफॉर्मेशन को अगर मतलब इजीली स्निफ ना कर पाए. एंड पासवर्ड प्रोटेक्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन. सो पासवर्ड प्रोटेक्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन. So these are some countermeasures of footprinting we have to use for countermeasures. So this is about today's session, and if you guys have some doubts you can ask. अगर आप किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. नो डाउट अर्चना. ओके, और किसी को कुछ पूछना है? ओके अतुल. हाउ इज योर इंटर्नशिप गोइंग ऑन? कैसा लग रहा है, कैसी लग रही है आपको इंटर्नशिप? ओके अतुल. एंड इंटर्न्स, आपको जो नोट्स हैं वो मेल कर दिए गए हैं, एंड असाइनमेंट का लिंक रात तक आपको डिस्कॉर्ड पे मिल जाएगा. ओके, प्लीज़ अपने मेल चेकआउट कर लेना नोट्स के लिए. थैंक यू अर्चना. अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो नाउ आई एम बाइंड अप द सेशन. थैंक यू गाइस. थैंक यू अर्चना.